this is a very famous orbicularis action which you can see here. This is the eyelid closing action. So this is what we use here. So these are the muscles for the eyelid. They are separate from the eyeball. Please remember. अब हम eyeball के muscle जा रहे हैं जिसमें questions बहुत होते हैं. So let's look at the eyeball muscles, and we call them extraocular. वो क्यों extraocular muscles क्यों? Why extra? Because all these muscles are attached outside the eyeball. Outside the eyeball. आँख के अंदर नहीं होता है. They are not outside. They are not inside. So extraocular like this. You can see that. See, all these are muscles attached on the surface of the eyeball. So सारे muscles देखिए, superior rectus, inferior rectus, the middle rectus. So these are muscles are attached on the surface of the eyeball. इसलिए extraocular. They are outside. The one muscles that are inside the eye, we call them intraocular. We call them intraocular. Okay. So this is the thing that you have. And let's look at the muscle actions that we ask so many times and many of you get confused. Like this is attachment, this is the way it's done. ये superior rectus है, inferior rectus है, ये middle rectus है, ये lateral rectus है, and this is the LPS ऊपर से आता हुआ the LPS, and this is the inferior oblique. So 6 muscles. This is the way. Now the problem is ये ऐसे attached नहीं होता है. They are not actually absolutely perpendicular like this. So there's slight angle होता है. Superior rectus comes like this, inferior rectus comes like this. So because of this angulation, the muscle actions जो होते हैं वो change हो जाते हैं, and this we have to memorize. So let's look at the movements of the eye. There are 6 movements of the eye, is not 6 movements. We can move the eyeball in 6 layers. ऊपर, which is called as elevation. Look down. This is called as depression. Not that which many of you are suffering right now. वो वाला नहीं. This one looking down, depression. When you look out, like look, this eyeball moves out like this. ये बाहर है. So it goes out. This movement is called as abduction. It's not. It's called as abduction. ऐसे. And this as it moves in towards the midline, called adduction. Right. So this is adduction. Adduction means towards the midline, towards the nose. Abduction means away from the nose. So elevation, depression, abduction, adduction. ये 4 हो गए main, and 2 rotatory movements. एक होता है intorsion. The eyeball rotates inwards like this. It's called intorsion, and rotates outward like this. Called extorsion. Okay. So we have these 6 movements. एक आंख 6 तरह से move कर सकते हैं. So elevation, depression, adduction, abduction, intorsion, extension. Okay, this is the each movement of the eye. So 6 movements of the eye. Now हमारे पास 6 muscles हैं, and we have to know which one does that. And that's the simplest. Lateral rectus causes abduction. Obviously, आंख बाहर ले जाएगा. And the medial rectus will cause adduction. They're the simplest. The muscle action is done because this is often been asked nowadays, and you can see this in this kind of a picture. Now you see that this is superior rectus. You see it's not absolutely vertical like this. हल्का सा angulation है. Okay, that is the problem. Similarly, inferior rectus बिल्कुल vertical है, हल्का सा angulation है बाहर की तरफ. Lateral medial बिल्कुल horizontal है. इसलिए medial rectus when it contracts, what will do? Will pull the eyeball inwards. So this will cause adduction. Lateral rectus बाहर ले जाएगा abduction. Okay, superior rectus. But these are the 2 simplest muscles. क्योंकि दोनों horizontal muscles हैं, so इनका कोई और component नहीं है. So they will trigger inward and outward, adduction, abduction. But the rest of the 4, superior rectus, inferior rectus, superior oblique, inferior oblique, just because they are not in string, they are not absolutely vertical and oblique like this. So they have other actions also. उनके अलग-अलग actions होते हैं. So medial rectus, lateral rectus तो simple है याद करने के लिए. But बाकी जो 4 हैं, superior rectus, inferior rectus, superior oblique, and inferior oblique. इनके 3 actions. They have 3 actions each. 3 just because of the angulation of the muscles, they have 3 actions each, and that may cause confusion. So many of you must remember this mnemonic called the SINRAD. याद करने के लिए mnemonic होता है SINRAD, not Sinbad, SINRAD. So SINRAD से you can use any mnemonic, कोई फर्क नहीं पड़ता. This is the worldwide accepted, that's why I'm teaching you. Otherwise you can use any mnemonic. SINRAD को हम divide कर देते हैं SIN and RAD. Okay, let's look at the first one. SIN. What does it say and how you memorize? Sin is not referring to the biblical sin of Adam and Eve. It's not referring to that. No? What it says is superiors intort. Sin का मतलब है जो superior muscles होते हैं वो intort करते हैं. Sin. तो superior muscles कौन-कौन से देखे थे? Superior muscles we have one superior rectus and superior oblique. So both of them will cause intorsion.
Okay, it's actually pretty good mnemonic if you want to memorize this, है ना? Superiors will always intort, sin. So those superior हैं, superior oblique and superior rectus. Now if the superiors cause intorsion, what will the inferiors do? Obviously extortion करेंगे ना? So that way we extrapolate this, inferiors would extort, इसको extort करेंगे. So inferior कौन से हैं हमारे पास? Inferior rectus, inferior oblique. So both of them will cause extortion. ठीक है, तो फर्स्ट हो गए. So this is actually good mnemonic and it uses very to remember this. The next part of the half of the mnemonic is RAD, R-A-D. What is that? RAD stands for rectus muscles cause adduction. Rectus muscles cause adduction, RAD है. तो इसमें rectus देखिए कौन से हैं? Superior rectus, inferior rectus. So superior rectus will cause adduction, inferior rectus will also cause adduction. Rectus, RAD, always rectus muscles will cause adduction. ठीक है. अच्छा, अब रेक्टस अगर अडक्ट करते हैं तो ऑब्लिक्स क्या करेंगे? अबडक्ट करेंगे, यू नो, बिकॉज दे विल अबडक्ट, बिकॉज द रेक्टस अडक्ट्स द ऑब्लिक्स विल अबडक्ट. सो हमारे पास ऑब्लिक्स कौन कौन से? वी हैव द सुपीरियर ऑब्लिक एंड वी हैव द इंफीरियर ऑब्लिक, ये दोनों अबडक्ट करेंगे. दैट मेक्स लाइफ इजियर. अब एक ही रह गया, देयर इज वन, और वो निमोनिक में नहीं है. उसको कैसे याद करते हैं? दैट्स वेरी सिंपल, जस्ट लुक एट द नेम. सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर. सो superior rectus will cause elevation, it will cause elevation. Or what about inferior rectus? Inferior means depression, so inferior rectus will cause depression. Inferior rectus will cause depression like this. Okay, ये हो गया. Now what about superior oblique, inferior oblique? Remember, because they're obliques, so they don't obey the rules, you know. Oblique ऐसे होता है ना, so rectus का मतलब straight होता है, so they obey rules. ऑब्लिक्स ओबे नहीं करते हैं. सो सुपीरियर ऑब्लिक को सुपीरियर जाना चाहिए था, दैट डजंट गो बिकॉज एन ऑब्लिक मसल, सो इट गोज ऑपोजिट, इट गोज इन्फीरियरली, उल्टा जाता है. सो सुपीरियर ऑब्लिक इन्फीरियरली ले जाता है, विच इज डिप्रेशन. एंड इन्फीरियर ऑब्लिक जिसको इन्फीरियर जाना चाहिए था वो उल्टा जाता है, वो सुपीरियर जाता है. सो दिस कॉज एलिवेशन. दैट्स इट. अब देखिए, नाउ वी हैव मेमोराइज्ड ऑल द मसल एक्शंस बाय सिंड्राम. सो सुपीरियर रेक्टस हैज थ्री फंक्शंस: इंटॉर्शन, adduction, elevation. Inferior rectus has extortion, adduction, depression. Superior oblique has intorsion, abduction, depression, and this is extortion, abduction, elevation. It sounds confusing, but it's not confusing at all. देखिए, इसको याद करने से, suppose you get a question like this exam में कि what are the three functions of the superior oblique, मान लीजिए. Okay? Now आपको idea नहीं, हवाई नहीं कि क्या है. So all is not lost. What you do, you write SINRAD. Okay, so first is superior is intort. Superior है, yes superior है, तो intort करेंगे. Rectus adduct, rectus है, rectus नहीं है, so it will cause abduction. And because oblique, so वो उल्टा जाएगा, superior के ऊपर की जगह वो नीचे आएगा, so it cause depression. You got all the three actions. This is how you memorize it. Okay, so इस निमोनिक से आप याद कर सकते हैं. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, लेट मी नो, आई कैन. किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करूं? एनीबडी हैव नॉट अंडरस्टूड? और लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. देख लो, लेट्स टेक इंफीरियर ऑब्लिक. ओके, आपसे पूछा गया व्हाट आर द थ्री एक्शंस ऑफ इंफीरियर ऑब्लिक. अगेन राइट सिंड्राम. सुपीरियर इंटॉर्ट, ये सुपीरियर नहीं है, सो इंटॉर्ट नहीं करेगा, एक्सटॉर्ट करेगा. रैड रेक्टस है, ये रेक्टस भी नहीं है, ऑब्लिक है, तो अडक्ट नहीं होगा, अबडक्ट करेगा. एंड inferior oblique है, inferior की जगह superior है, उल्टा है. Obliques always do not obey the laws, so it goes elevation. So this is the way we do it. Okay, so these are the three ways, all of them. ये चारों के लिए है, but not for medial rectus, lateral rectus, because they are straight lines and they can pull it medial अंदर की तरफ and lateral बाहर की तरफ. ठीक है, are you getting all this? आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना तो बोलो. मुझे लग रहा है आई एम एड्रेसिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डेफ डम म्यूट्स ऑफ इंडिया, जो अभी पुणे में हुई थी हाल में, और अगले साल श्रीनगर में होगा इंशाल्लाह. तो आप लोग समझ में आ रहा है? इफ़ यू आर प्लीज अंडरस्टैंड, से यस और नो. सी इट्स जस्ट अ डेमो, इट्स नॉट अ क्लास. यू डोंट हैव टू अटेंड माय क्लासेस, ऐसी ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू, व्हाइल यू आर हियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स. सो ये हो गया हमारा एक्शंस, थ्री मसल एक्शंस हो गए इसके. Now the next thing is a one sometimes we call this as agonist. You know, sometimes you get a question. Agonist, देखो, antagonist and synergist.
ओके, सो देयर आर द थ्री टर्म्स विच यू यूज फॉर मसल्स. एक एगोनिस्ट होता है, एक एंटागनिस्ट होता है, एक सिनर्जिस्ट. वो क्या है फर्क? एगोनिस्ट मीन्स द मसल विच डज द मेन एक्शन. किसी मूवमेंट का भी जो होगा उसका जो मेन मसल होगा, द मेन मसल विच डज द वर्क इज कॉल्ड एगोनिस्ट. फॉर इंस्टेंस कैसे होगा? लाइक फॉर इंस्टेंस आई वांट टू सी है, राइट आई का हम देखते हैं लैटरल लेते हैं. सो ये वाला आंख इज मूविंग आउट लाइक दिस. तो मेन मसल कौन सा हुआ? लैटरल रेक्टस, है ना, बिकॉज दिस इज द मेन मसल. सो एगोनिस्ट फॉर दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज लैटरल रेक्टस, राइट लैटरल रेक्टस इधर का. और एंटागनिस्ट क्या हुआ? ऑब्वियसली एंटागनिस्ट इज द ऑपोजिट मसल. सो द मसल विच इज अपोजिंग दैट एक्शन. सो लैटरल रेक्टस बाहर ले आ रहा है तो इसका एंटागनिस्ट हुआ मीडियल रेक्टस. सो राइट लैटरल रेक्टस एंटागनिस्ट हुआ और राइट मीडियल रेक्टस जो हुआ आपका एंटागनिस्ट हुआ. ये राइट आई की बात कर रहे हैं बिकॉज वी टॉक अबाउट वन आई. और सिनर्जिस्ट क्या होता है? सिनर्जिस्ट का मतलब अ मसल विच हेल्प्स द मेन मसल. एनी मूवमेंट कैन बी डन बाय टू मसल्स, वन मसल, टू मसल्स, थ्री मसल्स, कोई भी मूवमेंट हो. तो ये मेन मसल है, ये हेल्पर मसल है. ओके, दिस इज असिस्टेंट. नो, सिनर्जिस्ट मीन्स अ मसल विच हेल्प्स द मेन मसल टू abduct. हम लोग बाहर देख रहे हैं ना. अब abduction में देखिए हमारे पास abduction, राइट abduction है ऐसे. सो व्हाट मसल इज ऑल्सो abducting? इफ यू रिमेंबर हमने क्या था abduction. देखिए हमारे पास है द सुपीरियर ऑब्लिक इज abducting and inferior oblique is abducting. So when I look out like this, ये वाला जो एक्शन है वो तीन एक्शन से हो रहा है. द मेन मसल इज द लैटरल रेक्टस, ये वाला, और दो, एक इंफीरियर ऑब्लिक, एक सुपीरियर ऑब्लिक से भी हो रहा है. सो एक्चुअली वन एक्शन कैन परफॉर्म्ड बाय थ्री मसल्स. ओके, वन इज द सिनर्जिस्ट, वन इज द एगोनिस्ट, और जो उल्टा है वो एंटागनिस्ट है. आप समझ रहे हैं? और लेट्स टेक अनदर, एक और एग्जांपल. So let's take the right arc का inward action और superior. We'll take elevation ले लेते. चलो, say you look up like this, right eye का elevation ऊपर, ये वाला. So main muscle will be superior rectus, है ना. कुछ अरे इब्राहिम पीने के लिए पानी, पानी तो पुण्य है. ये मैं उतार दूँ चारों तरफ. We are festooned with these idiotic things, you know. So suppose I say right elevation है, तो right agonist हुआ the main muscle, this is right superior rectus. ठीक है. Antagonist कौन सा होगा? The muscle which is opposing it. So that will be this is agonist. Antagonist will be the muscle which is opposing this action, which will be the right inferior rectus. Will be right inferior rectus and opposite. और elevation movement में so there is other two muscles also helping, no? तो वो आ जाते हैं हमारे सिनर्जिस्ट में. सो लुक एट दैट. एलिवेशन और कौन कौन से हैं? जस्ट लुक एट दिस. एलिवेशन हमारे पास वी हैव सुपीरियर ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. एलिवेशन में हमारे पास एक इंफीरियर ऑब्लिक है और एक और है जिसमें सुपीरियर रेक्टस है. सो द इंफीरियर ऑब्लिक इज द मसल विच इज हेल्पिंग इट अप. राइट इंफीरियर ऑब्लिक. ओके, सो व्हाट विल हैपन इफ यू आस्क्ड द एंटागनिस्ट विल बी द राइट इंफीरियर रेक्टस, एगोनिस्ट राइट सुपीरियर रेक्टस, एंड द synergist will be the right inferior oblique जो उसको हेल्प कर रहा है. So please remember, so these are three terms. एक term और है which can confuse you, and that is called the yoke muscle. Yoke muscle तो बहुत पॉपुलर है. पानी वानी दे दे मेरे को. इतनी नाराजगी क्यों देने से? Thank you very much. So this is that. Now Yoke muscle, you know, you've definitely done your MCQs and you've done your exam. आपको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो योक होता क्या है? पहले योक का डेफिनेशन पता हमको. देखिए योक होता है ये वाला. You understand? This is the yoke. Those of you who have seen a bullock cart, bullock cart पे there are two bulls pulling it, no? अब one bull wants to go this way, the other wants to go this way. The cart would never move. तो इन दोनों को कैसे किया जाए? We have this wooden frame which connects the two necks of the. इसको योक बोलते हैं. ये YOLK नहीं है, एग वाला योक नहीं है. एग वाला ना, दिस इज अ डिफरेंट योक. का मतलब है दिस वुडन फ्रेम, दिस वुडन कनेक्टर व्हिच कनेक्ट्स द टू बुल्स सो दैट दे मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन. ओके, तो योक मसल्स का भी यही डेफिनेशन है. योक मसल का डेफिनेशन यही है. व्हाट इज दैट? इट इज अ पेयर ऑफ मसल्स दैट मीन्स फ्रॉम बोथ साइड्स, वन फ्रॉम द राइट, वन फ्रॉम लेफ्ट. देखो अभी तक जो एगोनिस्ट, एंटागनिस्ट और सिनर्जिस्ट थे, दे वर ओनली फ्रॉम द वन आई. वो एक ही आंख के थे. ये योक जो है इट हैज फ्रॉम बोथ आइज. ओके,
So yoke muscles are defined as a pair of muscles, one from each eye. That means one from the right eye, one from the left eye. Together when they contract, they move the eye in a single direction like this. देखो मेरी आंखें जैसे ऐसे जा रही है. Okay, ये वाली आंख इधर, आंख उधर. So these are the two yoke muscles. Similarly, when I look there, there are two yoke muscles. Okay, and yoke muscles is from our favorite MCQs. For instance, ये देखिए yoke muscles में this is the patient who is looking like this ऐसे. तो आंख ये right eye है, ये left eye, right? So it's movement like this. So this movement is called left. What we'll call it? Left abduction, है ना? तो देखो इसमें left eye जो है ये abduct कर रहा है, right eye adduct कर रहा है. So what are the two muscles? इनको yoke muscles बोलते हैं because they are so definitions a muscle from each eye. एक from right, one from left. Together when they contract, they pull the eye in the same direction. So अब देखते हैं जैसे ये हमारा है, this is the left eye जा रहा है. So left eye क्या कर रहा है देखो इसमें. The left eye is abducting. So this is the left lateral rectus. ठीक है. और ये right eye है. Sorry, उल्टा लिख दिया मैंने. I've written opposite. So this is the right eye. So right eye is doing adduction to medial rectus हुआ और left eye is adduction left lateral rectus हुआ. So these two we call yoke muscles. They remember yoke muscle में difference यही है कि that they are talking about two different eyes. In the previous example जो मैंने बताया था agonist antagonist वो एक ही आंख का था. The muscles are from the same eye. Yoke में दोनों आंख का है. So they will move like this or like this. So very favorite question of ours कि we will give you one muscle. You have to tell us the yoke muscle. Okay, like this. And कैसे calculate देखिए. Suppose I give you right lateral rectus and the MCQ is what is the yoke muscle of the right lateral rectus? Very simple. You just reverse initials. जो भी है उसको उल्टा कर दो. Right का है तो left लिखो. Lateral है तो medial, rectal. That's it. सबको उल्टा कर लो. Whatever the word is, reverse the initials. Right lateral rectus becomes left medial rectus. Whatever it is. Similarly, left medial rectus का yoke muscle would be right lateral rectus. No? And this makes life very easy. You don't have to work it out. Just उसको reverse कर दो आप. Let's take another example. Right superior rectus का yoke बताइए. So right becomes left, superior becomes inferior, rectus becomes oblique. क्योंकि there is a oblique muscle inferior oblique में है. Medial rectus में we didn't have a medial oblique और a lateral oblique. इसलिए जहाँ पर होता है just reverse कर दो. So right का left, left का right. Superior का inferior, inferior का superior. Rectus का oblique, oblique का rectus. With this you cannot do any yoke muscle action. वो कुछ भी हो, whatever it is you can do it like that. ये थोड़ा confusing जरूर लगेगा आपको, but MCQs में आते हैं and इसी में आप गड़बड़ करते हो. That is the difference between 149 and 150. एक मार्क का ये होता है. छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत मैटर करते हैं. रिमेंबर लाइफ इज अबाउट डिटेल्स. लाइफ इज अबाउट डिटेल्स. व्हेन वी डू सर्जरीज हमेशा मेरे को आई हैव टू प्लान द डिटेल्स कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा. नो, यू हैव टू प्लान द डिटेल्स एंड इट इज लाइफ इज अबाउट डिटेल्स. हर चीज़ में डिटेल होता है. आप ये नहीं कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं. कौन करेगा? खुदा करेगा. खुदा तो सब करते हैं. यू नो, इफ़ यू रीड द कुरान उसमें लिखा हुआ है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेस्टिनी. एक जो आप यहाँ पर लिखा होता है, जो ऊपर वाला लिखा है. एंड द सेकंड डेस्टिनी इज व्हाट यू मेक ऑफ योरसेल्फ. ओके, देयर आर टू डेस्टिनीज यू हैव. वन दैट ही हैज रिटन, यू कैन नॉट ऑल्टर दैट, बट व्हाट यू कैन ऑल्टर इज दैट व्हाट इज इन योर हैंड्स. तो उसको डिटेल्स बोलते हैं हम लोग. सो यू हैव टू केयर फोकस ऑन डिटेल्स. लुक एट दैट. फिर से हम करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट मी गिव यू अ राइट सुपीरियर ऑब्लिक योक मसल. इसको करिए प्लीज डू दैट. राइट का लेफ्ट है ना योक मसल, सुपीरियर का इंफीरियर, ऑब्लिक का क्या होगा? रेक्टस. यस, दैट्स इट. सो यू हैव गॉट योर राइट सुपीरियर ऑब्लिक का लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस. व्हाटएवर इट इज डजंट मैटर. कोई फर्क नहीं पड़ता. कुछ भी हो जाए आप उसको इनिशियल कर दो और आपको समझने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर इट विजुअल. सिमिलरली एनीथिंग. लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट का राइट, इंफीरियर का सुपीरियर, ऑब्लिक का रेक्टस. दैट्स इट. यू गॉट इट? सो दिस इज हाउ योक मसल्स आर इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. अच्छा, नाउ एक और प्रॉब्लम है. कई बार हम योक मसल इसमें क्या किया है, व्हाट वी हैव डन कि एक हमने मसल आपको दी है, दूसरा यू हैव टू वर्क आउट. कई बार आपको एक भी नहीं देते हैं, एक भी नहीं देते हैं, बट यू हैव टू वर्क आउट बोथ द योक. लेट्स लुक एट दैट. व्हाट वुड बी, दे से व्हाट आर द योक MCQ, व्हाट आर द योक मसल्स ऑफ डेक्स्ट्रोवर्जन. लुक एट द वर्ड डेक्स्ट्रो. डेक्स्ट्रो में यू नो व्हाट डेक्स्ट्रो मींस राइट, और लेफ्ट को क्या बोलते हैं? लीवो. यू नो बेसिक लैटिन टर्म्स. डेक्स्ट्रो मतलब राइट, लीवो मतलब लेफ्ट.
So dextroversion means that the eyeball is moving to the right, as like this is dextroversion. It's moving like this, है ना? Now आपको MCQ क्या है? What they have asked you कि what are the two yoke muscles of dextroversion? They have not given you single muscle, but we can still calculate. देखिए, see how dextroversion means I move like this, right side. तो पहले right का करते हैं because dextroversion क्या है? So let's look at the eye. As I move like this, so your right eye की because going out, what is the muscle here? Is lateral rectus, है ना? Right lateral rectus, dextroversion. You got one muscle. अब reverse कर दो उसको. Left medial rectus. So देखिए, you got your MCQ. What are the yoke muscles of dextroversion or right dextroversion? सिर्फ dextroversion is right lateral rectus and left medial rectus. You understand? So similarly हम कुछ भी कर सकते हैं. Similarly, let us say देखिए the MCQ is yoke muscle of the levoversion. Levoversion. Levo means left. So this means the eyeball is moving like this. So you tackle जिसमें जो लिखा लीवो डेक्स्ट्रो उसको पहले करो. So levo means left. So let's tackle this movement. This goes out. So this is the left lateral rectus. You've got your one muscle. So you just reverse it from left lateral rectus. It now becomes right medial rectus. You understand? So देखिए योक मसल एक का हम दो कर सकते हैं और अगर एक भी मेंशन नहीं है तो हम दोनों निकाल सकते हैं. एनीथिंग. लुक एट दिस. सपोज इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट. डेक्स्ट्रो elevation. The MCQ is what are the yoke muscles of dextro elevation? वो क्या है? Dextro means right elevation. देखो तो ये मूवमेंट कौन सी है? ये वाला dextro elevation. Okay. So first we'll talk the right. जिसमें है उसको पहले करो. So right है तो ये कौन सी हुई? Dextro right की superior rectus हुई ना? Superior rectus ऊपर करता है सबसे ज़्यादा. So the first muscle हो गई हमारी right की superior rectus और इसका reverse करो left inferior oblique. That's it. So you got it. So we've got the two muscles of dextro elevation. It doesn't matter whatever it is, you just get one muscle, reverse it, and you've got it. Similarly, एक और करते हैं, one last one. So levo depression. Let's do levo depression. वो क्या होता है? Again left side depression. So ये movement इस तरह है, levo depression, है ना? Like this, left and depression. So let's work the first this one. So left depression movement, left कौन सा? Inferior rectus. Remember, main depressor is inferior rectus. So you get a left inferior rectus. Now you got a right superior oblique. That's all. Have you got this? All of you. किसी को समझ में? Madam, in the very colorful hijab. क्या नाम? What's your name? Please. Arsenal. कहाँ से हैं आप? Which place are you from? Bihar. These colored hijabs are very popular in Bihar, Bhopal and Kashmir of course. Are you getting all this? किसी को समझ में नहीं है तो मुझसे फिर से पूछ. Please ask me again. We have time. This is a demo class. आप पूछ सकते हैं. फिर जब क्लास में आऊँगा तो फिर of course we may not do this because उसमें उतना वक्त नहीं होता है. So anybody has any doubts? Please ask me. शर्माइएगा नहीं. क्वेश्चन पूछने में कोई शर्माने की जरूरत नहीं है. Please remember you have to improve your scores. इस बार का रिजल्ट 20% था और नेक्स्ट का एग्जाम, नेक्स्ट ईयर का एग्जाम, दिस इज रिलेटिवली ईजियर एग्जाम. व्हाट आई फील इज रिलेटिवली ईजियर था इस बार. इसको निकाल सकते हैं. गर्मी बहुत हो रही, वैसे ही खून में बहुत ज़्यादा गर्मी है. दूसरी जेब में डाल इसको हम फेस्टून विद दिस, इसको डाल. So remember, what I expect is a more difficult paper next time. With those of you who are preparing the exam this time, this was relatively simple, I would say. इसमें दोनों एक में उतर गई तो वेट से. So this was relatively simpler, I would say. जिसमें and if you have not been able to get this time exam, too bad luck. But never mind. Okay, bad luck is not always going to last. Okay, so. Tomorrow is a new this thing. So please remember next time का exam थोड़ा सा tough हो सकता है and we may not have that good results, so you have to put in some extra effort. Right. So if you have any problems, please ask me again. Anybody would like me to do this? Or have you all got this? समझ में आ गया? बोलो तो सही. फिर से करूँ ये वाला लास्ट वाला. हाँ तो बोलो ना, इसमें शर्मा नहीं, क्या बात है. अच्छा बोलो तो ठीक है. I'm sorry I didn't hear you. So देखिए इसमें again इसमें लीवो डिप्रेशन देखिए. ओके और एक और करते हैं. लेट्स डू अ न्यू वन. लीवो एलिवेशन कर लेते हैं. मान लो लीवो एलिवेशन. सो लीवो मीन्स लेफ्ट एंड एलिवेशन मीन्स लेफ्ट. सो दिस इज द एक्शन. देखिए ये मूवमेंट ऐसे जा रहा है. सो
सो लीव एलिवेशन. सो पहले वॉट एवर इज आस्क्ड यू डू दैट. सो लेफ्ट का लेफ्ट रखा, एलिवेशन इज सुपीरियर रेक्टस, है ना, एलिवेटर तो सुपीरियर रेक्टस होता है हमेशा. सो यू गॉट लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस एंड द रिवर्स इज राइट inferior oblique. इस तरह से. So you see, yoke muscles are a very powerful question. They can give you one muscle, you have to do the second, and they may not give you any muscle, but you can still get both of them. समझ में आ रहा भाई साहब? क्या नाम? रहमान, बैठे. आपको समझ में आ रहा है? So anybody has a problem? Sure? ठीक है. दुखी लग रहा है बहुत ज़्यादा. क्लास ही तो खत्म हो जाएगी अभी. वैसे भी कहा मैंने उनको बंदी बना के रखा. जब आना आप आ जाएं, जब भी जाने चले जाए. Those back benches, anybody? Madam there in the corner, busy. क्या लिख रहे हैं? अपनी किस्मत लिख रहे हैं क्या? वो तो मैं लिखूंगा, आप ये लिखो. Have you got this? So let's move from here, from muscles. If you have any questions, please ask me. Otherwise, these are, as I said again, to revise. एक बार जल्दी से revise कर लेते हैं. So we have these. Remember the Synrad actions, है ना? So अगर Synrad actions है तो मुझे बताओ कोई. Anybody? Suppose I ask you, anybody, tell me the 3 actions of inferior rectus. Suppose I ask you, inferior rectus. मैडम क्या नाम? Sushmita. V-I-S. Jesus Christ. No? Difficult name. Vishmita, can you tell me the 3 actions of inferior rectus by doing Synrad? Yeah, Jessivio. करो, आप लिखो उसमें, you can do it. What are the 3 actions? Remember Synrad, no? So superior is intort, this is not superior, so this will extort. Rad में rectus तो है, so adduct करेगा, adduct करना, rectus है. और what is the last action? Elevation or depression? Depression, very good, because ये rectus है. Remember rectus मतलब straight, और जो straight होता है वो rules obey करता है. Oblique means not straight, वो obey नहीं करता, उल्टा करेगा. Okay, have you got this? So this is again Synrad से superior intort है, superior नहीं है, inferior है तो extort करेगा. Rad ठीक है, rectus है इसलिए adduct करेगा, और ये inferior rectus है तो rules obey करेंगे, ये depression करेगा. और oblique होता तो elevate हो जाता. Okay, so this is, you have to practice. थोड़ा सा practice करना तो पड़ेगा ना. These are things you have to practice a little bit. और for the man, superior rectus. Superior कौन करने वाला है? My friend क्या नाम? Krishna sir. Krishna, tell me the 3 actions of superior. Can you work out the thing? Intorsion, very good. Adduction, excellent. And elevation, wonderful. You done very well, Krishna. Synrad करके or whatever. आपके अपने मौलिक भी हो सकते हैं. So superior rectus, intorsion, rad है, rectus adduct है, and because this is a rectus, so it will superior go elevation. This is the way it is. ठीक? So this is the way होगा. और yoke muscles हमने करे हैं अभी. So this is one I wanted to focus on the muscle actions because आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार भी आए थे बहुत सारे. एक तो आया था कुछ. So as you can see this movement, ये ऐसे आ रहा है. So this is basically levo version. So right medial rectus and left lateral rectus are the yoke muscles. If you consider only one eye, दोनों आँख तो yoke muscles सिर्फ अगर इस आँख को करें, supposing we only consider this eye, this movement, okay? So this is the left eye moving out like this. So remember, the agonist will be the left lateral rectus, the antagonist will be the left medial rectus, and the synergist will be the left inferior oblique. Superior oblique भी करेगा, inferior तीनों. You can have one muscle action, you can have 2 muscles, you can have 3, all 3. So ये हो गए yoke ocular movements हो गए. The next thing I want to talk about is something called contrast sensitivity. Again, we don't talk about this too much because इतने सारे होते हैं, but this is a demo I want to talk to you about. So if you are already in the class, Alan वाले या join करना चाहते हैं तो you are welcome. So contrast sensitivity. Now contrast sensitivity is what? It's a very, very important optical performance. Okay. Contrast होता है क्या? Now first to understand this, contrast, what is contrast? Contrast is basically the difference of lighting between the background and the foreground. Okay. Background light और foreground light में जो फर्क होता है. For instance, today is a high contrast lighting. Why? Because it's a bright sunny day. It's a bright sunny day. उसे high contrast बोलते हैं. उसमें आपको सब दिखेगा. लेकिन हमेशा high contrast weather conditions नहीं होते हैं. कब low भी होते हैं. Like what? Like rain, like fog, like snow, like sleet. Understand? So वो होते हैं low contrast जिसमें sun shine नहीं करता है. So there is not enough background lighting. Those are called as low contrast conditions.
और उसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है. Look at that. So ability to see low contrast images in real world, like a street sign. आप drive कर रहे हैं, you have to in a darkness street sign. So visual actually आपकी vision 6/6 है, but still you are not able to see the street sign in a dark road. No, dark रास्ते पे आपको दिख नहीं रहा है. Okay, so this is called contrast. So you may have 6/6 vision, and yet you are not able to drive in a fog or a rain or a slow. Okay, this is called as contrast sensitivity. This is the single most important optical performance में. You know, many of us think कि vision is not the most important. The most important is contrast sensitivity for real world activities. Real world. देखो real world लिखा है मैंने. Snellen's chart पढ़ना अलग बात है और real world में drive करना बिल्कुल अलग बात है. Let's look at that. So detects objects without clear outlines and distinguish from their background. Okay. So जिस object से clear, जैसे आप Snellen's chart पढ़ते हैं उनके clear outlines होते हैं ना, A B C D होते हैं. But these are clear outlines. Like नहीं होते हैं. Like what? कि you are want to pour coffee in a dark jug. एक black color jug है. You want to pour coffee in it. नहीं कर पाए. You will not be able to see it because of contrast problems. There is a difference of the lighting. And particularly it results in visual loss out of proportion to visual eye. That means patient की जो 6/6 vision है वो है, लेकिन फिर भी वो ड्राइव नहीं कर पा रहा है. नहीं कंप्लेंट्स की डॉक्टर में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं मेरे साथ. You know. So it's something like this. Okay, look at that. अब देखिए, this is a typical low contrast thing. There is a fog here. No, it's night. रात हो गई है, बारिश हुई है. You can see the glistening streets and it's foggy. Now इसमें पेशेंट को 6/6 होगा तो भी दिक्कत होगी ड्राइव करने में. होगा कि नहीं होगा? हम सबको होगी. So and there are certain conditions में contrast कम हो जाता है. So ये contrast sensitivity जो होता है, we have to test. This is a very important test for people who lose contrast, and you have to remember one particular chart जो हम contrast टेस्ट करते हैं, उसका नाम आपको याद करना है. दिस इज कॉल्ड द Pelli-Robson चार्ट. प्लीज रिमेंबर दिस नेम, Pelli-Robson. दिस इज द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट कॉमन चार्ट. ओके, Pelli-Robson. उसमें देखिए कैसे होता है. लुक एट दिस हाउ इट लुक्स लाइक. यू कैन सी दीज लेटर्स कैसे हाई कॉन्ट्रास्ट से लो कॉन्ट्रास्ट में आ रहे हैं, है ना. यू कैन सी. सो वी आस्क हिम टू रीड. सो यू विल VRS KDR, फिर कम होता जा रहा है कॉन्ट्रास्ट, NHC SOK और कम, SCN OZV, और टिल लास्ट आते आते एक जगह पे पेशेंट को बोलो डॉक्टर साहब मेरे को दिख नहीं रहा है. Okay, so this is, you can see from high contrast to low contrast जा रहा है, and we have to measure the contrast. Otherwise, we cannot, these patients lose contrast in certain conditions like देखिए cataracts में, glaucoma में, optic neuropathy में, ARMD में. Okay, so these are certain conditions जिसमें contrast कम हो जाता है. So cataracts में, glaucoma में, optic neuropathy, ARMD वगैरह में कम हो जाता है. फॉर इंस्टेंस इसमें देखिए, इसमें कॉन्ट्रास्ट कम हो गया. लुक एट द पिक्चर इन दिस आई. इस बोर्ड पर इसमें देखिए, यू सी द डिफरेंस. इसमें क्लियर एंड शार्प दिख रहा है इन दिस बोर्ड, पर इसमें पुअर कॉन्ट्रास्ट है. बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में देयर इज नॉट इनफ कॉन्ट्रास्टिंग लाइट, सो यू कैन नॉट सी इट वेरी क्लियरली इन दैट चार्ट. दैट्स अ पुअर कॉन्ट्रास्ट चार्ट. दिस इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट, बट दिस अगेन नॉट वेरी गुड. सो काइंडली रिमेंबर, इसमें व्हाट वी हैव टू डू इज टू रिमेंबर MCQ में व्हाट इज द चार्ट व्हिच मेजर्स कॉन्ट्रास्ट. Pelli-Robson ये आपको रखना है. And you have to remember certain conditions जिसमें contrast कम हो जाता है, जैसे cataract, glaucoma, neuropathy, macular degeneration वगैरह वगैरह और भी होते हैं. But so basically remember, patient आपको क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को accident हो रहा है, I'm having an accident, I can't see, I'm stumbling, I'm falling in a dark street, मैं गिर जाता हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, and yet उसकी vision 6/6 होती है. So this is the evidence of contrast sensitivity. So please remember, this is the single most important एक्टिविटी फॉर विजुअल परफॉर्मेंस. विजुअल परफॉर्मेंस मतलब जैसे गाड़ी चलाना या चलना, वॉकिंग अबाउट इन अ डार्क स्ट्रीट. सो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. पेशेंट, as I said, they have visual also out of proportion to visual. 6/6 vision and still they're not performing well. They fall down, they have sustained injuries, they have trauma. So this is typical contrast. This is a very important part of contrast sensitivity. Okay? आपके 6/6 vision होगी and yet you may have problems with this. So this is called contrast sensitivity, and it's a more important measure of optical performance than vision itself. So these are your questions on contrast sensitivity. The next thing we want to talk about is grades of binocular vision. Okay, let's talk about that. What does grades of binocular vision mean? Binocular vision is one of the most important things you have to know. 3 grades होते हैं, grade 1, grade 2, grade 3. First of all, let's look at binocular vision. What does binocular mean? Means both, है ना. Monocular, unicular means 1, और monocular vision और binocular means 2. So you all know कि हमारे 2 आँखें हैं. So we call this BV
or BSV. You know, this is also called BV for binocular vision, which is a word which I do not like much. And BSV भी बोलते हैं, binocular single vision, एक ही चीज़ है, it's the same thing. Whether you call it BV or BSV is the same, binocular. Now इसमें you have to understand this word. See, we have two eyes, दो आँख है ना, पर दिखता तो एक ही है, दिखता तो एक ही ना. कि suppose I'm looking at Vismita, I have two images of Vismita, one on my right macula, one on my left macula. दो images हैं, but then I should see two Vismitas. पर खुदा का लाख लाख शुक्र है कि एक ही दिखती है, दो दिखे तो मुझे खुदकुशी करनी पड़े, है ना. So you see, this is very important for us because the fact that we have two eyes and still we do not see double. We don't see double, we see only one image. वो कैसे बनता है? That is called binocular vision. उसका first grade, the simplest grade, इसको बोलते हैं SMP. It stands for simultaneous macular perception. Simultaneous macular perception. What is that? Simultaneous macular perception में will happen first thing. See, when I look at it, suppose I look at Krishna here, and what will happen? See, one image of Krishna is forming on my left fovea, other on my right fovea. This is called SMP. So SMP is defined as a condition when two different images are forming on the two foveas. Okay? This is one, grade one. हम सबको SMP है. We all have this. But so I should have seen two Krishnas. दो दिखने चाहिए ना. तो दो क्यों नहीं दिखते? एक ही दिखता है. वो क्यों नहीं दिखता है? Because of the second grade, which is called as fusion. Fusion. What does that mean? The two images fuse into each other. ये जो दो इमेज बन रही हैं रेटिना पे, both of them they fuse inside the occipital lobe, occipital cortex में, occipital cortex. You know that the vision is, the center of the vision is in the occipital lobe, which is the smallest of the four lobes, you know, of the parietal, temporal, frontal, and the smallest lobe, occipital, is the occipital lobe. वहाँ बनता है जिसमें the center is called the primary visual cortex, PVC बोलते हैं उसको, you know, primary visual cortex. Where is the location of the primary visual cortex? PVC. Anybody? Can you tell me? Brain के तो बहुत से वो होते हैं ना, areas होते हैं ना. तो ये location where पूछा गया है, एक question रहा. Where is the, like, occipital lobe में तो है, correct. But occipital lobe, what is the specific part? There is a what is that area? Yes, Brodmann's area. Very good. Primary visual cortex is in Brodmann's area 17. पर वो location क्या है? Brodmann's तो एक mapping हो गई ना. Where is the exact location? वो जगह क्या है? It's called the, anybody? Have you heard of the calcarine fissure? No, सुना होगा ना, न्यूरो में पढ़ा होगा आपने. It's called the calcarine fissure. उसमें है. Calcarine fissure बोलते हैं. So this is the location of the primary visual cortex, which is mapped as Brodmann's area number 17. But kindly remember, ये MCQ पूछा गया है. Where is the exact location of the Brodmann's area 17 is in the calcarine fissure. So occipital lobe में एक particular fissure है जिसको calcarine fissure बोलते हैं. This is the location. So fusion जो होता है, the two images they fuse into each other inside the occipital lobe. They fuse. So that is why, because of fusion, that is the two images of Krishna, they fuse into two, and that is why I see one Krishna. Okay. Otherwise, I would see two, which would be terrible. Diploma would be terrible. But remember, fusion requires two important things. इसमें दो important fusion चीज होती है, which are very important. Otherwise, fusion नहीं होगा. What is that? First, the two images of Krishna, they should be located on the fovea. Center of the retina is the fovea, no? So they have to be foveal images. That means left image of Krishna should focus on my left fovea, and the right should focus on the right fovea. अगर fovea से बाहर है, तो fuse नहीं करेगा. बाहर क्यों होगा? Well, if you have a squint, अगर squint है, एक आंख आपकी बाहर है ऐसे, तो एक इमेज तो फोवे पे हो रही है, दूसरी तो फोवे पे नहीं होगी ना, क्योंकि बाहर चला गया. सो यू हैव टू हैव टू फोवियल इमेजेस फॉर फ्यूजन टू एक्ट. अगर फोविया पे इमेज दोनों नहीं बन रही तो फ्यूज नहीं करेगा. ओके, सो दैट्स वन, दैट्स द फर्स्ट रूल. पहला तो ये देखना है कि इसलिए स्क्विंट में पेशेंट को डबल विजन होता है, डिप्लोपिया होता है, बिकॉज स्क्विंट में एक बाहर चली जाती है. सो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज दे शुड बी बाय फोवियल इमेजेस, बाय फोवियल इमेजेस. एंड सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दो इमेजेस ऑफ कृष्णा की होगी ना, ऑन द लेफ्ट एंड द राइट फोविया, दे शुड बी एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए. मतलब दे शुड बी सेम साइज, सेम शेप, सेम कलर, सेम टेक्सचर, सेम एवरीथिंग अबाउट द टू इमेजेस. अदरवाइज फ्यूज नहीं करेगी. ऑब्वियसली कैसे फ्यूज करेगी? सपोज वन इमेज लुक्स लाइक कृष्णा, द अदर इमेज लुक्स लाइक सुदामा. क्या नाम? गणेश. वाह, क्या बात है. कृष्णा गणेश,
मंदिर में आ गया हूँ। और आप कौन, कार्तिक हैं? हाँ, वो राम, देखो साक्षात राम आ गए। सो so you understand, obviously they will only fuse if they are similar. एक इमेज अगर कृष्णा की हो, दूसरे आपकी कृष्ण गणेश की हो, तो ऑब्वियसली देवी देवताओं से डर लगता है, देवियों से ज़्यादा डर लगता है, तो दे कांट फ्यूज, दैट्स व्हाई दे कांट फ्यूज, सो दे हैव टू लुक एग्जैक्टली द सेम। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो फ्यूजन नहीं होगा। सो द टू इमेजेस हैव टू बी सेम और सिमिलर, ओके, और तब जाके वो फ्यूज होगा तो एक इमेज बनेगी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर दोज ऑफ अस, जो हम में से जिसके पास फ्यूजन नहीं है, उसको डबल विजन होगा, दे विल हैव डबल विजन, व्हिच इज एक्सट्रीमली डेंजरस टू हैव। सो दोज ऑफ अस हु लैक फ्यूजन विल हैव डिप्लोपिया और डबल विजन, ओके। एंड थर्ड जो हाईएस्ट है, थर्ड जो है स्टीरियोप्सिस है। रिमेंबर स्टीरियोफोनिक साउंड, सो इट्स अ 3-dimensional vision. Stereopsis is also called as depth perception. It's called as depth perception. और इसको हम 3-dimensional vision को 3D vision भी बोलते हैं, है ना। देखिए थर्ड जो इसका तो हाईएस्ट क्वालिटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए SMP हम सबको है, we all of us have SMP, all of us fusion, लेकिन all of us do not have equal stereopsis. सब कुछ लोगों को stereopsis कम है, किसी की स्टीरियोप्सिस ज़्यादा है। स्टीरियोप्सिस क्या पहले तो डिफाइन कर देखिए, स्टीरियोप्सिस मतलब 3-dimensional vision. सो देखिए अगेन, सो आई एम लुकिंग एट कृष्णा, सो वन आई फॉल्स ऑन माई लेफ्ट फोविया, राइट फोविया, ये हो गया SMP, एंड बिकॉज दे आर ऑन फोवियल पॉइंट्स एंड सेकेंड देयर इमेजेस लुक सिमिलर, सो दे विल फ्यूज, सो आई सी वन इमेज। बट रिमेंबर दोनों इमेजेस ऑफ कृष्णा जो फॉर्म हो रही है वो दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि द टू images, the two eyes are different place, no? Suppose I have a camera and one यहाँ पे, एक दूसरा कैमरा यहाँ पे, जब मैं दोनों की फोटो लूँगा तो कृष्णा की फोटो अलग आएगी थोड़ी सी ना, क्योंकि ये वाला जो कैमरा है इट विल टेक अ बेटर पिक्चर ऑफ लेफ्ट साइड, और ये जो कैमरा है बेटर पिक्चर राइट साइड होगा। सो सिंपली बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन पोजिशन ऑफ द टू आईज, द टू पिक्चर्स दैट द ब्रेन इज रिसीविंग ऑफ कृष्णा आर नॉट द सेम। हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है, मोस्टली सेम है, सेम साइज है, सेम कलर है, सेम शेप है, सब कुछ है, लेकिन हल्का सा फर्क है। हल्का फर्क क्यों? क्योंकि एक आंख इधर है, दूसरी आंख इधर, ऑब्वियसली दे कैन नॉट बी सेम ना। और ये जो हल्का सा फर्क है इन द टू इमेजेस, दिस स्लाइट डिफरेंस इन इमेजेस बिटवीन द टू आईज, दिस अलाउज द ब्रेन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड कृष्णा एंड गिव अस अ idea of the 3-dimensional, which is called 3D vision or depth. देखिए, see suppose I walk like this, as I walk like this between you people, why don't I hit the two edges? मैं यहाँ पे क्यों नहीं टच हो रहा है? Because of depth perception, because stereopsis. ये जो हल्का सा डिफरेंस है, ये मेरे को डेप्थ परसेप्शन से पता चल रहा है, अदरवाइज आई वुड नॉट बी एबल टू मेक आउट द स्पेस बिटवीन देम एंड आई वुड हिट लाइक दिस। अब समझ, स्टीरियोप्सिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रियल लाइफ। क्रिकेट में आप कैच करते हैं, फुटबॉल में खेलते हैं, इज बिकॉज ऑफ स्टीरियोप्सिस। जो हल्का सा स्पेस है, ये छोटा सा जो स्पेस है, ये स्टीरियोप्सिस के कारण होता है। इट्स 3-dimensional विजन, लुक एट दैट, दिस इज स्टीरियोप्सिस। देखो ये आपको दिख रहा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोप्सिस। यू कैन मेक आउट कि ये 3D में इमेज है, लेकिन फर्क देखिए 3D और 2D में। लुक एट दैट, दिस इज अ एनिमेशन, दिस इज अनदर, लुक एट द डिफरेंस, दिस इज अ 2D इमेज, दिस इज 3D इमेज, दिस इज अ डेफिनेट डिफरेंस, इज नॉट? और हमको दिखता है ऐसे 3D। ह्यूमन बींग्स हैव दिस यूनिक एबिलिटी कि हमको 3-dimensional विजन होता है कंपेयर टू अ 2-dimensional विजन, और इसे अलादीन है। ओके, सो ये 3-dimensional इमेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस अलाउज द पीपल फॉर अस टू ड्राइव केयरफुली, एंड दोज ऑफ यू डू नॉट, एज आई सेड, हम सबके पास इक्वल स्टीरियोप्सिस नहीं होती ना, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। सो अगर जिसकी कम होती है, जिसकी कम से होती है, दीज आर पीपल हु ऑफन हैव एक्सीडेंट्स। आप जब ड्राइव करते हो नो, सपोज मेनी ऑफ यू ड्राइव कार्स एंड स्कूटर्स है ना, तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता है। ये गोद गलियाँ, ये जो गलियाँ हैं गौतम नगर की, भूल भुलैया जो है, यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि सपोज आप स्कूटर चला रहे, मैडम इज ड्राइविंग स्कूटी, नो, मतलब सपोज, एंड कोई पास में उसको चल रहा है, तो इफ़ शी कैन नॉट मेक द डेप्थ, दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता चल रहा, स्टेप्स नहीं है, सो शी विल गो एंड हिट द अदर गाय। So many of you have poor stereopsis, some of you have good stereopsis. सबका इक्वल नहीं होता है, और जिसका नहीं होता है उनको हम बोलते हैं वो सर्जिकल नहीं है। यू नो, सपोज many of you would want to do, ये पास करके we want to take a PG entrance exam में you want to do take up surgery. Okay, so जो माइक्रो सर्जन्स होते हैं, नो, माइक्रो सर्जन मतलब दो,
ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ENT, उनको हम माइक्रो सर्जन्स बोलते हैं बिकॉज वी वर्क इन स्मॉल स्पेस लाइक दिस। आई बॉल की डायमीटर कितना है 24 मिलीमीटर, दैट्स ऑल। हल्का सा अगर आपका स्टीरियोप्सिस कम है तो आप डैमेज करेंगे, यू विल एबल टू कैटरैक्ट करते करते आपने रेटना काट दी पेशेंट, ओहो आपकी तो रेटना ही कट गई, आप बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। मेरी रेटना कट गई, रेटना कैसे कट, नहीं मेरे को दिख ही नहीं रहा था वो रेटना, आप बिल्कुल सूरदास बन चुके हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सो प्लीज रिमेंबर दोज ऑफ यू हैव पुअर स्टीरियोप्सिस एंड वी टेस्ट, हमको टेस्ट करना पड़ता है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप माइक्रो सर्जरी मत उठाएं। डेप्थ परसेप्शन अगर आपकी नहीं है तो ENT या ऑफ्थेल्मोलॉजी नहीं कर सकते, आप सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी में लिवर और स्प्लीन में तो बहुत स्पेस होता है ना, और अगर बिल्कुल ही डेप्थ परसेप्शन नहीं है तो फिर आप साइकेट्री कर लेना, साइकेट्री, उनको तो कोई डेप्थ की जरूरत ही नहीं है, अंकुर को तो इमोशनल डेप्थ तक नहीं है ना, कल पड़ा होगा अंकुर का वो ना, तो सो वो साइकेट्री। सो देयरफॉर रिमेंबर स्टीरियोप्सिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इन रियल लाइफ बिकॉज 3 डायमेंशनल विजन जो होती है बहुत जरूरी होती है, ओके लाइक दिस। अच्छा नाउ सो 3D जो होता है तभी होगा जब आपकी दोनों आंखें होती है ऑब्वियसली। सो व्हाट अबाउट पीपल हैव ओनली वन आइज, नो, तो उनको नहीं होती क्या, होती है, उनको भी होती है बिकॉज वो ट्रेन कर लेते हैं ब्रेन को, पर उतनी अच्छी नहीं होती है। क्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं मोनोक्यूलर क्यूज। सो रिमेंबर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि डज अ वन आइड पर्सन और अ पर्सन हु इज ब्लाइंड इन वन आई, डज ही हैव सम काइंड ऑफ स्टीरियोप्सिस? यस, दे हैव सम काइंड ऑफ स्टीरियोप्सिस बट इज नॉट वेरी गुड, नो, लाइक दिस। देखिए ये एक आंख का पिक्चर है और इसमें शेडिंग के वजह से, बिकॉज ऑफ शेडिंग यू कैन स्टिल मेक आउट कि इसमें एक होल है, यू कैन मेक आउट इट्स अ डेप्थ पर दिख रहा है आपको, ये सिर्फ वन आई की पिक्चर है। सो दीज आर कॉल्ड मोनोक्यूलर क्यूज। सो इवन विथ वन आई यू कैन स्टिल हैव सम डेप्थ परसेप्शन बट नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी गुड, नो। एंड द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस वाज ऑफ कोर्स दिस क्रिकेटर जो हमारे आप लोगों ने शायद ना सुना हो, मंसूर अली खां पटौदी, यू हर्ड ऑफ दैट, MA पटौदी, जो इसके फादर थे, मतलब Saif's dad, no? So he was one of the, he had only one eye. Mac Pataudi, no? Mansoor Ali Khan, he had only one eye. He had an accident in Oxford, he lost one eye. And yet he was one of the best fielders of India, you know? He used to take blinding catches, you know? He used to take standard, usually about mid-off or something. And एक हाथ से, एक आंख से he could take catches. He was a famous example of one eye, and yet he had trained himself so well that he would still have some kind of binocular vision, okay? So, this is how we can have. So, but best of course, stereoptically, we have to this kind of thing. Okay. So again, so let me just summarize what we did. 3 stages. सबसे basic होता है SMP, simultaneous magnification, which all of us have, where the 2 objects they focus at the same time. Simultaneous मतलब at the same time. So when I look at you, सामने जब रहमान को देखते हैं तो जो रेज आ रही है मेरे दोनों फोकस है एक ही टाइम पर both the rays are coming from Rahman hitting my 2 foci. Okay, that's SMP, सब में होता है. Second fusion है, both the image of Rahman fuse to each other, so I see only one Rahman. Okay, ये किसी में नहीं होता है, किसी में होता है, जिसमें नहीं होता है उसको डिप्लोपिया होता है और जिसमें होता है he has 5. But because the 2 eyes are placed at a certain distance between in space, so I see Rahman slightly different. My left eye sees Rahman slightly differently and the right eye sees Rahman slightly differently. तो दोनों का जो फर्क है, द ब्रेन वर्क्स आउट द डिफरेंस इन द 2 इमेजेस एंड कैलकुलेट्स द डिस्टेंस बिटवीन अस, जो हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो दूरियां हैं हमारे बीच की, वो ब्रेन कैलकुलेट कर सकता है, एंड दैट गिव्स अस द स्टीरियोप्सिस, व्हिच इज द बेस्ट, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बाइनोकुलर विजन, without which we cannot walk, we cannot drive, we cannot, in many professions you will have big problems. So 3-dimensional vision is, and remember it is only given to us human beings, okay? ये so called lower animals जिसको बोलते हैं उसमें नहीं है. Lower animals मतलब जैसे cows and buffaloes में नहीं है. Cows and buffaloes में नहीं होती है उनकी 3D vision, उनको सिर्फ 2 dimension में दिखता है, okay? They don't have stereopsis, okay? So that is why you see sometimes, you're walking on the street, suppose Ganesh you're walking on the street, and some गाय भैंस आ जाती हैं and they come very close to you, almost touch you literally and go by. It's not because they think you Krishna Kanhaiya or something, They come close to you because they cannot make out the distance between you and their own this thing. क्योंकि स्टीरियोप्सिस नहीं होती उनको 2 डायमेंशन दिख रहा होता है जो ऐसे होता है, like this. Okay? So please remember, stereopsis is extremely important for us. So those of you of us who have poor stereopsis, what is important? They should not drive, or at least if they drive, they should not drive 2-wheelers. I always tell my patients that कि आपको 2-wheeler नहीं चाहिए, स्कूटर, गाड़ी वाड़ी में तो सेफ हो सकते हैं, पर
आप टू व्हीलर नहीं चला सकते क्योंकि एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, बाइक्स एंड स्कूटर्स, और आप बहुत महीन काम नहीं कर पाएंगे। जो स्टिचिंग होता है या एम्ब्रॉयडरी होता है या सर्जरी होता है, उसमें पोअर स्टीरियोप्सिस कैन नॉट वर्क। ठीक है, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट बेसिक्स आई वांट टू टॉक अबाउट कॉन्ट्रास्ट, वी टॉक अबाउट ocular motion, ocular movements, and we talked about binocular vision. And now we'll take a short break for lunch break and we'll come back and then I'll talk about various aspects जो हम लोग करने वाले हैं. It's a demo, so we'll talk about cataracts, talk about glaucoma, refraction. Class still about 6 o'clock. तो आप लोग please have a lunch. We'll at about 2:50. 45 minutes is fine? 45 minutes? 1 hour कितना? 1 hour? 40 minutes fine? So around 3:10. तो 3 बजे मेरी घड़ी में अभी 2:40 में करीब हो रहा है. सो 3 बजे we'll start this thing. जो आना चाहे आ जाएं, और जिनको नहीं आना है वो खुदा की मर्जी, आपकी मर्जी. ठीक है, सो लेट्स मीट अराउंड 3. थैंक यू वेरी मच एंड बी ब्लेस्ड. Any questions?